बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक गेमिंग पीसी में जो हमने पहले बनाया था उसका मदरबोर्ड अपग्रेड करने वाले हैं। इसमें पहले हमने asrock का B310 मदरबोर्ड लगाया था। थोड़ा सा बजट कस्टमर का बढ़ गया तो उसको हम MSI का गेमिंग B450 मदरबोर्ड लगाने वाले हैं। इसमें 6 SATA पोर्ट हैं, M2 SATA SSD वाला भी पोर्ट है और इसमें रैम के भी 4 स्लॉट हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है। इसकी कीमत मार्केट में 10,500 रुपये करीब आता है। तो इसको लगा के हम थोड़ी सी गेमिंग पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं कि कैसा हमारा गेमिंग पीसी का जो मदरबोर्ड अपग्रेड कर रहे हैं क्या परफॉर्मेंस आती है उसके बाद। ठीक है, करके देखते हैं। ये हमारा बोर्ड है, इसका पूरा 450। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in. तो ये था छोटा सा हमारा गेमिंग पीसी में एक मदरबोर्ड अपडेट करने का वीडियो। इसमें हमने आपको दिखाया कि पुराना मदरबोर्ड हटा के नया MSI का B450 मदरबोर्ड हमने अपडेट करा है गेमिंग पीसी की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिखाया कैसे मदरबोर्ड चेंज करा जाता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ विदा लेते हैं। आपका दोस्त है आज।